राइट जी, yesterday we left off at topic 2.5.1. ये हम सेकंड चैप्टर जो परफॉर्मेंस डोमेन्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उसमें टॉपिक हमारा आ गया प्रोग्राम और प्रोजेक्ट की अनसर्टेनिटी। जनरली मैंने आपको ये बताया था कि जो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट में हो सकता है, प्रोग्राम में उससे कहीं ज्यादा होता है। आप ये देख लेना कि इससे यही पता चलता है कि प्रोग्राम बड़ी चीज है और प्रोजेक्ट छोटी चीज है। प्रोजेक्ट अगर छोटी चीज है तो उसकी अनसर्टेनिटी उतने पीरियड के लिए होगी। प्रोग्राम जितना लंबा होगा उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी और उतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी होगी। मतलब 100% सारी चीजें तो पता नहीं हो सकती। प्रोजेक्ट में भी हम अनसर्टेनिटी इसी वजह से कहते थे कि शुरू शुरू की बातें तो हमें ज्यादा क्लियर होती हैं काफी हद तक, लेकिन बाद में क्या होगा हमारे साथ और बाकी क्या सूरत हाल सामने आएगी वो हमें नहीं पता होता। इसकी वजह से हम कहते हैं कि यार अनसर्टेनिटी ज्यादा है या इसमें रिस्क हाई है। प्रोग्राम में तो डेफिनेटली रिस्क हाई है। उसकी वजह यह है कि अगर ये देखिए 20 साल का प्रोग्राम है तो 20 साल तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? किसने देखा है 20 साल? तो मतलब आप इमीडिएटली 1 साल 1.5 साल तक तो देख सकते हैं, बाकियों को तो आप आउटलाइन प्लान ही कर सकते हैं। इस वजह से लाजमी बात है कि जो आपको स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो आपको बेनिफिट रियलाइज करने के लिए दिया गया है, वो बेनिफिट तो वही है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी भी बदल सकती है। उसकी वजह से आपके जो बेनिफिट्स हैं या जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ट्विक करने की जरूरत होगी। तो आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और के अंदर सब प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो कंपोनेंट चल रहे हैं, वो भी रिवाइज किए जा सकते हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। तो यू कैन रीऑर्केस्ट्रेट एवरीथिंग। और ये भी मुमकिन है कि जैसे जैसे आप प्रोग्राम की लाइफ में आगे बढ़े तो एक ऐसा स्टैंड स्टिल पॉइंट आ जाए कि आप कहें कि नहीं यार ये तो अब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से अलाइन रह ही नहीं सकता, इसको तो हम परसीव कर ही नहीं सकते, और ऐसी सूरत में हमें प्रोग्राम को फिर बंद करना पड़ता है। तो ये बात जो मैंने आपसे की कि प्रोग्राम में अनसर्टेनिटी प्रोजेक्ट के मुकाबले में वो बेहद ज्यादा है। अनसर्टेनिटी इज एन इनएविटेबल चैलेंज ऑफ मैनेजिंग प्रोग्राम्स। Uncertainty is especially high in the beginning of a program as the outcomes are not clear. मतलब जैसे प्रोजेक्ट में भी हम यही बात कहते थे कि शुरू में तो कुछ भी यकीनी नहीं है ना। बेशक हमें इमीडिएट चीजें किसी हद तक नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ भी यकीनी नहीं है। मतलब अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, जब हमने काम शुरू ही नहीं किया तो हर चीज ही अनसर्टन है, पता नहीं कैसे टर्न आउट करेगी। लेकिन फर्ज करें मैं आधा प्रोग्राम कर चुका हूं, तो अब मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि आधा जो कुछ मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है, अब बाकी आधे में है। तो उस हिसाब से अनसर्टेनिटी निस्बतन कम हो गई आधे प्रोजेक्ट के बाद। तो इस तरह जैसे जैसे हम प्रोग्राम की लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हमारी अनसर्टेनिटी कम होती जाएगी, वजाहत आती जाएगी, और हम ज्यादा बेटर तरह से चीजों को प्लान कर सकेंगे। और इस तरह हम करते कराते अपने बेनिफिट्स को ट्वीक करते करते अल्टीमेटली अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। और अगर यहाँ ऐसी किसी जगह पे अटक गए कि यहाँ मकसद अचीव करना नामुमकिन हो गया, तो ये वो जगह होगी जहां पे प्रोग्राम को बंद भी किया जा सकता है, और लाजमी बात है ये पोर्टफोलियो का डिसीजन होगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि स्पेशली हाई इन द बिगनिंग ऑफ अ प्रोग्राम एज द आउटकम्स आर नॉट क्लियर। Programs and projects both exist in organizational environment in which the output, benefits or outcome of the work may be somewhat unpredictable or uncertain. लाजमी बात है कि अभी वो चीजें जो अभी हुई नहीं है उनके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है। एक तो इनहेरेंट अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, कि प्रोग्राम का पता ही नहीं है कैसे टर्न आउट करेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ज्यादा अनसर्टन प्रोग्राम होते हैं, जो हाईली रिस्की प्रोग्राम होते हैं, वो और भी ज्यादा अनसर्टन होते हैं। Changes external to organizational environment also create uncertainty. जो बाहर के हालात हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बाकी हालात में तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं मुल्क में या इकोनॉमी में या किसी और चीज में, लाजिमी बात है प्रोग्राम इतनी बड़ी चीज है कि उसके ऊपर वो चीजें इम्पैक्ट करती हैं ज्यादा, which increases the uncertainty of managing programs. Within the context of the organization, however, individual projects may be considered to be more certain than programs. मतलब मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं इन प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा जो इसके कंपोनेंट हैं प्रोग्राम के। तो जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं वो तो निस्बतन कहीं ज्यादा सर्टन हुए ना,
ऑल्दो हम कहते हैं कि उनमें भी अनसर्टेनिटी होती है और काफी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम के मुकाबले में तो फ्लैट वो ज्यादा सर्टेन। तो प्रोग्राम में मतलब लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इनहेरेंटली बहुत ज्यादा है। Programs and projects exist in organizational environment in which the output or outcome of the work may be somewhat unpredictable or uncertain. ये बात हमने कर ली। Within the context of the organization, individual projects are considerably more certain than programs. ये दो बातें अभी जो हमने पढ़ी हैं। Expected results जो कि हमारे outputs हैं of the project are generally more certain than those of program at the time of their inception. जिस वक्त हम कंसीव कर रहे होते हैं चीजों को, उस वक्त हमें प्रोजेक्ट्स में pretty much पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या रिजल्ट हासिल करने जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में काफी डामाडोल है। As projects proceed, their abilities to deliver those outputs on time, on budget and according to specification become more certain as a result of progressive elaboration that removes uncertainty during the course of the project. जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे चलता है तो उसकी अनसर्टेनिटी कम होती है, जैसे मैंने प्रोग्राम के हवाले से भी बात की। लेकिन प्रोग्राम तो ज्यादा लंबी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज है, इसके अंदर क्या होगा? By contrast, programs may not have their entire scope determined upon initiation. मतलब इनिशिएशन के वक्त पूरा स्कोप भी ग्रेस्प नहीं हुआ होता, उसमें भी बेइंतहा तब्दीलियों का इम्कान होता है। दिस एस्टेब्लिशेस द इनिशियल अनसर्टेनिटी, मतलब हम जहां एबनिशो से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर बुनियाद में ही हमारी अनसर्टेनिटी बैठी हुई है। अबाउट द प्रोग्राम डायरेक्शन एंड आउटकम, आगे ये क्या डायरेक्शन लेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद हम स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर तो प्ले अराउंड कर ही सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो स्कोप एंड कंटेंट आर कंटिन्यूअली एलैबोरेटेड, क्लैरिफाइड एंड एडजस्टेड। मतलब देखें ना, स्कोप खाली प्रोग्राम का तो स्कोप नहीं है ना, प्रोग्राम का स्कोप तो बिल्ड होगा प्रोजेक्ट्स के स्कोप से, और प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपैंड हुए में पूरे प्रोग्राम डिलीवरी के दौरान उनके स्कोप एस्टेब्लिश हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने एक बेनिफिट को मद्देनजर रख के तो प्रोजेक्ट्स के स्कोप डिफाइन करने हैं, और वो स्कोप और कंटेंट जैसे जैसे एलेबोरेट होता जाएगा वैसे वैसे प्रोग्राम का स्कोप वाजे होता चला जाएगा। टू इंश्योर द प्रोग्राम आउटकम्स रिमेन इन अलाइनमेंट विद द इंटेंडेड बेनिफिट, ये हमारा बेसिक मकसद है कि जिन मकासद के तहत जिन बेनिफिट्स को रियलाइज करने के लिए हम निकले थे, क्या वो अलाइनमेंट अभी भी कायम है? जिस स्ट्रेटजी के साथ हम ये सारा काम करने निकले हैं, क्या वो भी अलाइंड है? अगर किसी जगह पे भी हमें ये इशारा मिले कि ये अलाइनमेंट अब नहीं रह सकती या खत्म हो गई है, तो ये इस प्रोग्राम का जवाज जो बिजनेस केस है वो खत्म हो जाएगा। This results in an initial program environment that is recognized to be uncertain, शुरू में प्रोग्राम अनसर्टन है, and implies that the need for a management style that embraces uncertainty in order to address it more effectively. अब हमें ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमें, मतलब आपको ये शक वाली बात नहीं है कि प्रोग्राम अनसर्टन होते हैं, प्रोग्राम अनसर्टन है, और अब मुझे ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करना है मैनेजमेंट का कि हम इस बात को कबूल कर लें कि अनसर्टेनिटी तो होगी, अब इसके बावजूद हम किस तरह मोर इफेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है जी, तो मतलब एक तरह से आपने अपना हैंडीकैप एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं जो मर्जी कर लूं, मैं बहुत सर्टन हो ही नहीं सकता प्रोग्राम में, आई हैव टू गो अलोंग विद दिस हैंडीकैप, और अब मुझे फिर भी अगर चीजों को बेहतर तरह से मैनेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। बिकॉज अ प्रोग्राम्स अप्रोच में बी मॉडिफाइड, अब प्रोग्राम को चलाने का तरीका या उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनके अंदर तब्दीली का इम्कान है, और आप करते रहेंगे। जैसे जैसे आपका प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन होगी, आपको अपना डायरेक्शन चेंज होता हुआ नजर आए, रीअलाइन करने की जरूरत पड़ती है, और उसमें आप ये फील करते हैं कि फलाना जो मैंने प्रोजेक्ट इसके अंदर इंडक्ट किया हुआ था अब उसकी जरूरत नहीं रही, तो मैं उसको बंद भी कर सकता हूँ, मैं उसको ट्वीक भी कर सकता हूँ, मैं उसका स्कोप भी बदल सकता हूँ। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम टू ऑप्टिमाइज परसूट ऑफ इट्स गोल्स, program activities may be observed either to decrease uncertainty or at times to uncover
इट लीडिंग टू परसीव्ड इंक्रीजेस इन अनसर्टेनिटी। तो प्रोग्राम एक्टिविटीज जो हैं वो मुसलसल इसी मुशक्कत में लगी हुई हैं कि या तो अनसर्टेनिटी अनवील हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, अनसर्टेनिटी डिक्रीज हो जाए, या जो चीजें पहले नहीं पता थी वो पता चल जाए, चीजें अनकवर कर लें हम अनसर्टेनिटीज को, ताकि हम उनका कोई इलाज ढूंढ सकें। प्रोग्राम्स में इंक्लूड इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रोजेक्ट जो कि होते ही हैं उसके अंदर, दैट आर एंटायरली सक्सेसफुल in achieving their intended delivery, providing output product service precisely as planned। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है प्रोग्राम के इंग्रेडिएंट कंपोनेंट्स जो हैं वो जबरदस्त तरीके के साथ चल रहे हों, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आप यील्ड कर रहे हो, प्रोजेक्ट की सक्सेस होने के बावजूद कंपोनेंट्स सब सक्सेसफुल हो गए हैं, उसके बावजूद ऐसा बिल्कुल इम्कान है कि प्रोग्राम फेल हो जाए। ये भला कैसे? भाई आपने शुरू में जो कंसीव किया था मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा और मेरे प्रोग्राम के मकासद ये हैं और वो अचीव हो जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट तो कामयाब हो गए लेकिन मकासद चेंज हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनसर्टेनिटी की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आपके प्रोजेक्ट तो कामयाब हो, प्रोग्राम कामयाब ना हो। तो हमें प्रोग्राम को ट्वीक करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट के साथ डेफिनेटली अनसर्टेनिटी रिमूव होगी, बिकॉज प्रोग्राम इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोग्राम तो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर और बाकी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, बेनिफिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको उसके हिसाब से अपने आप को ट्वीक करना होगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर कोई बहुत ज्यादा तब्दीली आपके स्ट्रेटेजी में नहीं आती तो हम जनरली सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे प्रोग्राम में। However, in the context of programs outcomes and desired benefits, these individual component projects may not contribute at all to the outcomes that was anticipated। मतलब वो जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और वो कामयाब हो रहे हैं, हो सकता है कि वो कामयाबी आपके प्रोग्राम की कामयाबी को कतअन कंट्रीब्यूट ना करे। This creates additional uncertainty about the results the program may achieve। हम वहां पे बैठ के ट्वीक भी कर सकते हैं ना। अगर हमें लग रहा है कि हमने मतलब हम तालीमी म्यार बढ़ाने की बात कर रहे थे, हमने कहा जी हमने तालीम बालगां पे भी इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतने प्रोजेक्ट तालीम बालगां के शुरू कर दिए, लेकिन हमें वो बेनिफिट नहीं मिल रहे और बेनिफिट जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वे मे बी वी नीड टू कैरी आउट अ लिटिल, कोई एक आध प्रोजेक्ट हमें रिसर्च का करना हो और हमें ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत हो कि यार किस एरिया के को एक्सप्लोर किया जाए, और बाद में हमें पता चले कि वी हैव टू वर्क मोर ऑन द यूथ, और फिर हम अपने जो कंपोनेंट्स का रुख उस तरफ डाल दें, नए कंपोनेंट्स वो शुरू कर दें, थिंग्स लाइक दैट। तो इस तरीके के साथ ये छोटी मोटी ट्वीकिंग होती रहेगी, राइट। प्रोग्राम मैनेजमेंट provides organizations with effective framework for managing interrelated grouping of work designed to produce benefits not achievable by managing the work as individual initiatives। वो तो बात हम समझते हैं कि जिस काम को हम यहाँ यूनिफाइड करके करना चाह रहे हैं, मिला जुला के कंसोलिडेट करके करना चाह रहे हैं, अगर उन कामों को अलग-अलग किया जाए तो कंसोलिडेशन का एलिमेंट तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब है वो बेनिफिट तो हम कभी भी नहीं ले सकते। लेकिन जो सिचुएशन अभी जिसको हमने डिस्कस किया है वो काफी काबिले फिक्र है कि यार ये क्या हुआ कि हम जो इनिशिएटिव सोच के बैठे थे कि ये हमें बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट नहीं दे रहे, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब हमने शायद प्रोग्राम को मिसकंसीव किया, उसके अंदर के कंपोनेंट्स को मिसकंसीव किया, या जिस रिसर्च की बेस के ऊपर हम इनिशियली चले थे वो शायद वैलिड नहीं रही। Unlike projects that are characterized as unique and temporary, programs are often large, complex, lengthy, and tend to be less well defined। डिफाइंड ही नहीं है प्रॉपर तरीके के साथ। बड़े भी हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेंथी भी हैं। तो मतलब इसमें आप यूं समझ लें कि एक बहुत ही ज्यादा संभाल के चलने वाला काम है। This section discusses two characteristics that distinguish programs from projects। अब वो क्या है?
These fundamental differences are found in the way projects are managed in response to uncertainty and change. तो दो चीजें, एक uncertainty और एक change, ये दो चीजें हैं जो fundamental हमारे वो two characteristics हैं. Uncertainty को पहले ले लीजिए. With a focus on benefit realization and the multiple components that work together to produce the intended outcomes, the complexity and duration of program demands that the program manager take a broad collective view of all the program's components to thoroughly understand and successfully manage the progress and contributions of the component parts. कहते ये बात होगी कि हमने जो चीज टेलर की है वो इसी हिसाब से की है. हमने कम्प्लेक्सिटी को भी मद्देनजर रखा, हमने ड्यूरेशन को भी मद्देनजर रखा और हमने कहा कि एक ऐसा ओवरऑल व्यू लिया जाए कि हमें वो बेनिफिट यील्ड हो. मगर ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि एग्जैक्टली वो बेनिफिट यील्ड हो. This distinguishes and differentiates the program management and project management approaches and explains the need for both within a program. The expected output of projects are generally more certain. ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं. More certain than those of programs at the time of their inception. शुरू के वक्त प्रोजेक्ट ज्यादा सर्टन लगते हैं मुकाबला प्रोग्राम. This can be attributed to the project's fixed constraints. वो जो हम स्कोप, टाइम, कॉस्ट और वो रिसोर्स और क्वालिटी और सब करते हैं, तो उन कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम काफी हद तक यकीन रखते हैं कि अच्छा अगर ये हुआ तो ये हिल जाएगा. तो उसमें जो वेरी करने की गुंजाइश है वो उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर है. As a project proceeds, its ability to deliver those outputs on time, on budget and according to the specification becomes more certain. हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि जो नताइज हम हासिल करना चाह रहे हैं वो हमें मिल भी रहे हैं कि नहीं है, और नहीं है तो फिर हम प्रोग्रेसिव एलेबोरेट करते हैं. लेकिन वहां की प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन जो प्रोजेक्ट लेवल की है वो इतनी इंटेंस नहीं होती. So that removes uncertainty during the course of the project. जैसे जैसे वो क्लैरिटी आती है तो हमारी अनसर्टेनिटी रिमूव होती जाती है. वेयर जहां पर प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन हमें गहरी खाई में लेके जा रही होती है, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि हम सही डायमेंशन, सही डायरेक्ट रास्ते पे चलने के बजाय हम बहुत गहराई में चले जाए. By contrast, a program may not have its entire scope, budget or timeline determined upon preparation. This in turn can be addressed by the program's ability to deal with uncertainty, because programs can change the direction of projects, cancel projects, or start new projects to adapt to changing circumstances. This ability creates uncertainty about the program's direction and outcome. प्रोग्राम हमारा कहाँ जाके अंत होगी, इसकी ये कहाँ से चला है और कहाँ पहुंचेगा, कोई इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. During the program, scope and content are continually being elaborated, clarified, and adjusted to ensure program's outcomes remain in alignment with the intended benefits. जो short term benefits या program के outcomes हैं वो हमारे ultimate जो intended benefits हैं उनके साथ aligned रहें. This results in an initial program environment that is recognized to be uncertain and implies the need for a management style that embraces uncertainty in order to address it more effectively. वही बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ये इन सब चीजों की रोशनी में हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा. हमें अनसर्टेनिटी को कबूल करते हुए कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम अपना काम अकम्प्लिश कर सकें. The program may include individual components that meet and are fulfill all of their success criteria, providing output, product, service are precisely as planned. मतलब हो सकता है कि जो इस प्रोग्राम के इंग्रेडिएंट कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल कामयाबी के साथ मुकम्मल हों. However, in the context of program's outcomes and intended benefits, these individual components may not contribute to all of the outcomes that were anticipated. This creates additional uncertainty about the outcome of the program may achieve. With the focus on benefit realization and the multiple components that work together to produce the intended outcome, the complexity and duration of the program demand that program manager take a broad collective view of all the program's components to thoroughly understand and successfully manage the progress and contributions of the component parts. This distinguishes and differentiates the program management and project management approaches and explains the need for both within a program.
फिर चेंज की बात आ जाती है, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चेंज की। प्रोग्राम मैनेजर नीड्स टू कंसीडर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चेंज। एक इंटरनल चेंजेस हैं और एक एक्सटर्नल चेंजेस हैं। इंटरनल चेंजेस रेफर टू चेंजेस विद इन द प्रोग्राम, और लाजिमी बात है ये वो वाली चेंजेस हैं जिनके लिए हमें प्रॉपर प्रोग्राम के अंदर रहते हुए चेंज रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक्सटर्नल चेंजेस जो हैं रेफर टू द नीड टू अडॉप्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी एबल टू एक्सप्लॉइट द बेनिफिट्स क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं ताकि वो इसके बेनिफिट्स को एक्सप्लॉइट कर सके, तो दिस इज एक्सटर्नल चेंज। जो चीज प्रोग्राम के अंदर आएगी, प्रोग्राम के अंदर की तब्दीली है जिसका असर भी उसके अंदर उन्हीं चीजों पे है, वो इंटरनल है और बाकी एक्सटर्नल। इश्यूज रिलेटिंग टू चेंज शुड बी एड्रेस्ड डिफरेंटली विद इन प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। मतलब चेंज जो है उसको आपने प्रोजेक्ट में और तरह से देखते हैं, प्रोग्राम में और तरह से देखते हैं। एक तो ये समझ लीजिए ना कि प्रोग्राम का जो वॉल्यूम भी देखें ना आप, प्रोग्राम चीज कितनी बड़ी है। प्रोजेक्ट्स डील विद चेंज इन टर्म्स ऑफ स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी, जबकि as with uncertainty, programs should be better equipped to deal with change because they have the ability to change the direction of a component, cancel a component or start a new component। पर ये तो अल्टीमेट अथॉरिटी रखता है कि प्रोग्राम का रुख किस तरफ मोड़ना है, मोम की नाक की तरह। In both programs and projects, there should be a rationale that justifies that the advantages originating from a postponed change will outweigh potential drawbacks. Change within a project affects the defined deliverables at the tactical level, और जो change within है उसको लाने के लिए change request करनी पड़ेगी, whereas change within a program affects the delivery of the intended benefits at the strategic level. Managing change within our program requires strategic insight and understanding of the program's objectives and intended benefits. Change to any component within a program may have a direct impact on the delivery of the other related components, which necessitates a change in those specific components. Change of a project is generally local to the project and related to the tactical level. In programs, change management is a key activity enabling stakeholders to carefully analyze the need for proposed change, the impact of change, and the approach or process for implementing and communicating change. The change management plan, which is part of the program management plan and developed during program preparation, establishes the change management authorities. मतलब कहने का ये इंटरनल चेंज को एड्रेस कर रहा है और ये कह रहा है कि जिस तरह प्रोजेक्ट में आप कोई चीज जब बेसलाइन से हटती थी तो हम क्या करते थे, हम उसको चेंज रिक्वेस्ट बनाते थे उसकी, और चेंज रिक्वेस्ट किसके मुताबिक बनती है, चेंज मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक बनती है। चेंज मैनेजमेंट प्लान क्या है? चेंज मैनेजमेंट प्लान बुनियादी तौर पे तो जितने भी आपके नॉलेज एरियाज होते हैं वो उनका के बारे में सब डिटेल्स उसके अंदर ही होती है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, तो ये जो वाले एरियाज जो हैं इनके अंदर जो तब्दीलियां होनी है वो इनके अंदर ही लिखी हुई है। लेकिन वो है प्रोजेक्ट का लेवल। प्रोग्राम के लेवल में क्योंकि अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो इसकी वजह से ये मसला क्रिएट हो जाता है। तो एस्टैब्लिशेस द चेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो चेंज मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म बनाए, चेंज मैनेजमेंट का प्लान बनाए, चेंज मैनेजमेंट की अथॉरिटीज डिफाइन करें, सिचुएशन बताएं कि क्या चीज स्लिप होगी, कितनी स्लिप होगी, तो मुझे चेंज मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये वही वाला तरीकाकार है जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते थे, चेंज रिक्वेस्ट। कहाँ चला गया? ये बात हमने कर ली, ये भी हमने कर लिया। ओके। इन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फिल्स अ की फंक्शनल रोल इनेबलिंग स्टेक होल्डर्स टू क्या कर सकें जी, केयरफुली एनालाइज द नीड फॉर प्रपोज चेंज।
जो अब चेंज रिक्वेस्ट प्रोग्राम की तरफ से जा रही है उसके अंदर हम एक थॉरो एनालिसिस देंगे, उस चेंज को लाने की वजह बयान करेंगे, उस चेंज का इम्पैक्ट बताएंगे और अपनी अप्रोच बताएंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग दैट चेंज. The change process also establishes the authority that certain stakeholders and team members will have for collectively approving or disapproving. प्रोग्राम चेंज, अब किसकी बात हो रही है? प्रोग्राम के अंदर चेंज रिक्वेस्ट या चेंज मैनेजमेंट की बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही है, इंटरनल की बात हो रही है. प्रोग्राम मैनेजर्स अप्रोच change at the program level in a fundamentally different way. Program managers depends on a predetermined consistent level of performance from the component of the program. For components that are projects, program managers are rightfully expect the projects to be delivered on time, on budget, with scope and with an acceptable level of quality. तो ये तो project की हद तक बात होगी, components की हद तक बात होगी. For other programs and program activities, the program manager should require that each be performed in a manner that will contribute positively to the program's outcome and anticipated benefits are reduced the negative outcome. For program components, so program components such as projects and change management is employed to understand and control the variability of each component schedule, cost, and output. In addition, program managers can create new components or cancel existing components. This change is made to ensure the optimum delivery of benefits. In project, change management is employed to help the project manager, team and stakeholders monitor and control the amount of variance. पहले हमने एग्जीक्यूशन तक बात की थी, अब हम उसकी वेरिएंस की बात कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं फ्रॉम द प्लान कॉस्ट एंड स्केड्यूल while protecting the approved attributes and characteristics of the planned output. एक मिनट, स्लाइडें मेरी इधर उधर हो गई. Okay, for program components such as in project, change management is employed to understand and control the variability of each component, schedule वगैरह. In addition, program manager can create new components and cancel existing components. This change is made to ensure the optimal delivery of benefit. तो इस किस्म की जो तब्दीलियां हम करते हैं वो हम अपनी जो डिलीवरी है बेनिफिट्स की उसको यकीनी बनाने के लिए करते हैं. जहां तक प्रोजेक्ट की चेंज का ताल्लुक है, मतलब कंपोनेंट चेंज का, in projects, change management is employed to help the project manager, team, and the stakeholders monitor and control the amount of variance from the planned cost schedule while protecting the approved attributes and characteristics of the planned output. If a change is required that impacts the cost, schedule, scope, quality, output, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें यहाँ आ जाएंगी, मतलब deliverable or expected results, then a change request is developed to modify either the cost, schedule, or intended output deliverable for the project. अगर वो change request accept हो जाती है, change is incorporated into the structure of the project and cost, schedule, and attributes are adjusted to accommodate all aspects of the change. The project is then replanned and the updated cost, schedule, and deliverables become the new baseline for the project. Project के वाले से बात हो रही है, तो once completed and accepted, change management is employed to ensure project remains aligned and with a new baseline. Projects use change management to help manage the impact of variance caused by known risk and by expecting events the project encounters to on its path to completion. अब जनाब इस चेंज को मैनेज कैसे किया जाए? प्रोजेक्ट की चेंज है, प्रोजेक्ट इज देन रीप्लान. अब जो भी चेंज आई है उसके हिसाब से हमें रीएडजस्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना पड़ेगा. द अपडेटेड कॉस्ट, स्केड्यूल एंड डिलीवरेबल स्पेसिफिकेशंस बिकम द
new baseline for the project. Once the project change request is completed and accepted, change management is employed to ensure the project remains aligned with the new baseline. Projects also use change management to manage the impact of variance caused by known risks that were triggered expected events and unknown risks that were triggered unexpected events. It's part of a project completion. Given the consistent delivery of the program's components, the program manager addresses the uncertainty of the overall program outcome and anticipates that it is possible for some of the program's components to be successfully delivered, but will produce entirely unexpected results that may or may not contribute positively to the intended benefit of the program. In order to address the program's inherent unpredictability, this program manager may group individual components to manage them more effectively. सर ये सब प्रोग्राम क्रिएशन की बात की है इसने सब प्रोग्राम क्रिएशन प्रोजेक्ट की बात हो रही थी प्रोजेक्ट चेंज की बात हो रही थी सर लास्ट में in order to address the program's inherent unpredictability the program manager may group individual components to manage them more effectively. हाँ ठीक है may group individual components to manage them more effectively प्रोग्राम की सूरत में भी किया जा सकता है सब प्रोग्राम की सूरत में लेकिन ये जरूरी नहीं है मतलब ये कि अगर मैं अपना जो फ्लो बनाऊंगा प्रोग्राम का उसको ही इस तरह करूं कि रिलेटेड वर्क जो एक चंद बेनिफिट्स की तरफ जा रहा है उनको मैं ग्रुप कर लूं नॉट एज अ सब प्रोग्राम मगर ऐसे ग्रुप कर लूं और पहले मैं इन एक्टिविटीज को खत्म करूं फिर दूसरे के करूं तो ये दिस डज नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन ऑफ द सब प्रोग्राम ओके थैंक यू पर वो एक आपका जाविया ये हो सकता है कि शायद ये भी मुमकिन हो जाए In addition, the program manager may redirect, replan, or stop individual efforts entirely knowing they will not help achieve the desired program benefits if left unattended in the context of the evolving environment. When this occurs, the program manager को इस बात का यकीन हो जाए कि इन तिलों में तेल नहीं है, the program manager employs change management at the program level to redirect and modify the trajectory of the program to ensure it aligns with the expected value to be delivered. The new strategy, the social or economic state, are the perceptions of the program's beneficiaries. Programs use change management in a forward-looking, proactive manner to adopt the program to the evolving environment. Additionally, this is an iterative process repeated frequently during the performance of a program to ensure the program delivers the benefit plan and the start of the program. So to summarize, project employs change and change management. एक तो ये बात, although हमें ये बात पता है कि हम ये change का सिलसिला project में भी करते हैं, लेकिन जहां जो change है वो एक dimension ही different है. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि projects employs change and change management to constrain or control the impact of variability on the outputs of the effort while programs proactively use change management to keep the program itself and program components aligned with the various aspects of the environment in which they are performed. फिर ना प्रोग्राम और प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं जिसके बाद फिर शुरू करता हूँ जस्ट अबाउट 5-10 मिनट्स अच्छा जी चैप्टर 3 जो है हमारा वो है प्रोग्राम स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट ये पहली परफॉर्मेंस डोमेन है मतलब जनरली तो हमें इंट्रोड्यूस हमने कर लिया पांचों डोमेन के साथ लेकिन पहली परफॉर्मेंस डोमेन को हम डिस्कस करें इसका रोल जो एक तरह से यूं समझ लीजिए कि शुरू करने का रोल है वो जो आपने ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइनमेंट करनी है प्रोग्राम अपना क्या कहते हैं उसको बेनिफिट्स की अलाइनमेंट करनी है ये वो वाला काम है
और जब ये आप कर लेते हैं तो एक तरह से यूं कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो बिजनेस केस हमारा था वो यहाँ कंफर्म हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस केस आप नहीं बना रहे, बिजनेस केस बनाना तो बिजनेस एनालिस्ट की जिम्मेदारी होगी या किसी और की होगी, जिस किसी ने भी ये प्रोग्राम, ये फिजिबिलिटी इसकी रन की थी। लेकिन अब चूंकि काम प्रोग्राम मैनेजर को दे दिया गया है कि आपने करना है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप ही शुड टेक इज टू डू दिस डोमेन प्रोग्राम स्ट्रेटजी अलाइनमेंट। अगर अलाइनमेंट होगी तो फिर हम आगे अगले कामों में जा सकते हैं। अच्छा, और मजे की बात है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि ये अभी होकर खत्म हो जाएगा। वी विल कीप डूइंग द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होती रहेगी, और जहां कहीं हमें ये फील हुआ कि हम अलाइनमेंट से आउट हो रहे हैं तो इमीडिएटली हमें उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। ओके जी, यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, पहला है प्रोग्राम का बिजनेस केस, दूसरा है प्रोग्राम का चार्टर, तीसरा है प्रोग्राम का रोड मैप, फिर इसकी एनवायरमेंटल असेसमेंट्स हैं, और आखिर में प्रोग्राम की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में हम रिस्क मैनेजमेंट फॉर स्ट्रेटजी अलाइनमेंट देखेंगे, प्रोग्राम रिस्क के थ्रेशोल्ड्स देखेंगे, इनिशियल प्रोग्राम की रिस्क असेसमेंट देखेंगे, और प्रोग्राम रिस्क रिस्पांस स्ट्रेटजी देखेंगे। मतलब यूं समझ लीजिए कि जो आपने नॉलेज एरिया पढ़ा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट का, अब वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्ट्रेटजी अलाइनमेंट के अंदर आ गया। ठीक है जी, तो ये जो डोमेन है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की, दिस कवर्स द प्रोग्राम रिस्क, लेकिन प्रोग्राम रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। प्रोग्राम strategy alignment is the performance domain that identifies program outputs and outcomes to provide benefits aligned with the organizational strategic goals and objectives. मतलब एक तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी अलाइनमेंट में आपने अपनी अपनी जो प्रोग्राम के आउटपुट्स और आउटकम्स को सेट करना है, ताकि वो बेनिफिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी गोल और ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं उनको हम अचीव कर सकें या टारगेट कर सकें फॉर दैट मैटर। प्रोग्राम का बिजनेस केस, चार्टर, रोड मैप और ये 4-5 हेडिंग जो है ये हम यहाँ इसमें डिस्कस करेंगे। पहले है प्रोग्राम मैनेजर की अपनी अंडरस्टैंडिंग। To accomplish this, program manager need to have a thorough understanding of how the program will fulfill the portfolio and organizational strategy, goals and objectives, and the skills needed to align with the long-term goals of the organization. मतलब हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी को अकम्प्लिश करने के लिए कर रहे हैं, और हम एक छोटा मोटा स्ट्रेटजी हमारी अपनी भी है प्रोग्राम की, और वो क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को के साथ अलाइनमेंट में रहती है। When an organization develops a strategy, where there is typically an initial evaluation and selection process that may be formal or informal to help the organization determine which initiatives to approve, deny, or defer as part of the portfolio management practice of the organization. Key difference between program and project management is the strategic focus of program. प्रोग्राम का स्ट्रेटेजिक फोकस तो बिल्कुल बड़ी चीज है ना जी, वो तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक फोकस होगा। मैं ये भी बताता चलूं कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनकी भी स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन वो किस बात की स्ट्रेटेजी होती है? वो स्ट्रेटेजी होती है प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट बनाने की। यहाँ पे बड़ी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेनिफिट रियलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो प्रोग्राम की स्ट्रेटजी है वो उसके हिसाब से सो आर डिजाइन टू अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड फैसिलिटेट रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स। टू अकम्प्लिश दिस, प्रोग्राम मैनेजर्स require strategic visioning and planning skills to align with the long-term goals of the organization. स्ट्रेटजी के हवाले से, as an organization develops a strategy, there is typically an initiative, evaluation and selection process. पहले तो जो इनिशिएटिव है उसको आप evaluate करते हैं, और अगर वो वायबल है तो फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस को शुरू करते हैं। That helps the organization determine which initiatives
to approve, deny, or defer. Whether formally or informally, an organization selects and authorizes the initiatives it wishes to implement. The more mature an organization is in terms of program management, the more likely it is to have a normalized selection process. A decision-making body in the form of a portfolio review board or an executive steering committee, whomsoever is there, may issue a program mandate that defines the strategic objectives and benefits a particular program is expected to deliver. The program mandate confirms the commitment of organizational resources to determine if a program is the most appropriate approach for achieving these objectives and triggers that program initiation phase. While the project manager lead and direct the work on their components, it is the program manager's responsibility to ensure alignment of the individual plans with the program goals and intended benefits. It is of support for the achievement of the organization's strategic goals and objectives. ये जनाब वो चीजें हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं पूरी अलाइनमेंट को. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान बना हुआ है, उससे हम दाखिल हुए हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर. यहाँ पे सर ये मेरे लिए स्लाइड नहीं चेंज हो रही है, आप तो शायद डायग्राम दिखा रहे हैं. अच्छा, अब हो रही है. अब ठीक है, अब ठीक है. इससे पेशतर मैं आपको दिखा दूं क्या क्या हमने स्लाइडें की हैं. ये था ना जी प्रोग्राम स्ट्रेटजी अलाइनमेंट. क्यों नहीं स्लाइड चेंज होती? ये था जी. तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लान है, लाजिम है, उसके मातहत हमने रहना है. उसके मुताबिक हमने एक बिजनेस केस बनाया. उस बिजनेस केस में हम एनवायरमेंटल असेसमेंट को भी उसकी करेंगे और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करेंगे. ये हमारा बिजनेस केस है. फिर जब हमने चार्टर बनाया तो चार्टर में भी ये दोनों चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं और प्रोग्राम रोड मैप में भी, और अल्टीमेटली इसके बाद बनेगा प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान. तो जहां तक अच्छा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये स्ट्रेटजी अलाइनमेंट की बात हो रही है. इसको आप 100% उस तरह से मत देखें कि जैसे लाइफ साइकिल थी. लाइफ साइकिल थी, 3 चीजें थी ना उसके अंदर, और इवन जो उस लाइफ साइकिल के अंदर भी प्रोग्राम डिलीवरी थी, उसके अंदर भी वो 3 चीजें थी इसके अंदर. लेकिन यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ये इस वक्त इसको मैप करना पड़ेगा आपको, उसके साथ करके देखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट्स जो व्हाइट कलर में शो हो रहे हैं, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एनवायरमेंटल असेसमेंट, प्रोग्राम बिजनेस केस, प्रोग्राम चार्टर और प्रोग्राम रोड मैप, ये जो 5 चीजें हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं. और ये जो है ये इंटरनल टू द स्ट्रेटेजी. ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान इनपुट है सिर्फ, और प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान इससे आउटपुट के तौर पे जा रहे हैं. मतलब ये है कि जब बिजनेस केस बनेगा, चार्टर बनेगा और सब कुछ होगा, अल्टीमेटली तो रोड प्रोजेक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान ही डेवलप होना है उससे नेचुरल फोकस में. Program strategy alignment is initiated with the development of a program business case. The program business case is a documented economic feasibility study used to establish validity of the benefits to be delivered by a program.
It justifies the need for a program by defining how a program's expected outcomes would support the organization's strategic goals and themselves. Okay, फिर program charter और roadmap है. As the documented economic feasibility study is used to establish validity of the benefits to be delivered by a program, the business case is then further used as an input to the program charter, and subsequently फिर एक काम कर लिया दूसरा भी कर लेंगे, program roadmap भी बन जाएगा. These three documents are established as part of program formulation की एक्टिविटीज हैं. फिर बिजनेस केस है जी आपका. Organizations build strategy to define how their vision will be achieved. The completion of the strategic planning cycle results in the creation or update of the organizational strategic goals and objectives, which is documented in the organization's strategic plan. The organization's vision and mission are used as input to the strategic planning cycle and are reflected throughout the strategic plan. फिर आ जाता है जी strategic plan. Organization strategic plan is subdivided into a set of organizational initiatives that are influenced in part by. अच्छा, अब ये जो चीजें यहाँ पे लिस्टेड हैं, ये वो जनरल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से तब्दीली आती है आपके स्ट्रेटेजिक प्लान के अंदर. मतलब इन चीजों से आपकी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव इन फैक्टर्स के ऊपर वेरी करता है. मार्केट की डायनेमिक्स को देखा जाता है, कस्टमर और पार्टनर की रिक्वेस्ट को, शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट को, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को देखा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखी जाती हैं, और रिस्क एक्सपोजर एंड कंप्यूटर प्लान्स एंड एक्शंस, ये चीजें हैं जो आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं. These initiatives may be grouped into portfolio to be executed during a predetermined period. ये भी मुमकिन है कि हम उसको उन तो चीजों को आप पोर्टफोलियो की शक्ल में देखें. Strategic alignment क्या है? Programs are formally evaluated, selected and authorized based on their alignment and support to achieve the organization's strategic plan. Otherwise, we can have okay. So, organizational strategy plan usually as part of the organization's governance practices. To facilitate alignment and goal setting, the organization's strategic plan is further delineated as a result of goals and objectives that may have measurable elements such as products, deliverables, benefits, cost, and timing, etc. Strategic goal क्या है जी? Strategic goal of linking the program to the organizational strategic plan is to plan and manage a program that will all help the organization achieve its strategic goals and objectives and to balance its use of resource while maximizing value. So this is achieved through the business case. बिजनेस केस में क्या क्या चीजें बताई जा सकती हैं, ये सब चीजें मैंडेटरी नहीं है. बिजनेस केस तो मतलब ठीक है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर पूरी फिजिबिलिटी पड़ी है, मगर इन पॉइंट्स को कंसिडर आप कर सकते हैं कि आपके ये जो बिजनेस जो है, ये बिजनेस आउटकम इसका क्या है, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट क्या है, और मेरा ख्याल है कि ये जो हाई लेवल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज बड़ी बात है, इसको अगर वो खुद जाके बिल्डिंग मैनेजर के साथ ये बात किस तरह लिखवा ली जाए तो वो मसला भी हल हो जाता है. की assumptions हैं, बिजनेस एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट है वगैरह. ओके जी. थोड़ा सा ब्रेक कीजिए जी, मैं थोड़ा ये
चार्टर शुरू करता हूँ, उसके बाद ब्रेक। मुझे थोड़ी थोड़ी Sure, sir. ब्रेक लेनी पड़ रही है। I hope everything is okay. But anyways, राइट जी, आई एम बैक। प्रोग्राम चार्टर की बात करते हैं जी। पहले हमने बिजनेस केस की बात की, अब प्रोग्राम चार्टर है। फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ द बिजनेस केस, द प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। अब ये प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी है, ये तकरीबन प्रोग्राम स्पॉन्सर वाला काम करती है। स्पॉन्सर भी हो सकता है, स्टीयरिंग कमेटी भी हो सकती है, दोनों में से एक चीज एग्जिस्ट कर सकती है। वो क्या करते हैं जी कि जब बिजनेस केस अप्रूव हो जाता है तो वो प्रोग्राम को तब ऑथोराइज करते हैं थ्रू बाय मींस ऑफ अ प्रोग्राम चार्टर। और ये जो प्रोग्राम चार्टर है ये बुनियादी तौर पे बिजनेस केस से डिराइव किया जाता है। तो प्रोग्राम चार्टर लाइक प्रोजेक्ट चार्टर में भी जिस तरह हम कहते थे कि ये असाइन और ऑथोराइज करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर को। नंबर एक, प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, मतलब उसको असाइन कर दिया जाता है और ऑथोराइज कर दिया जाता है। और फिर डिफाइन द स्कोप एंड पर्पस ऑफ अ प्रपोज प्रोग्राम। जो मकसद है आपके प्रोग्राम का वो क्लियर कर दिया जाता है। प्रेजेंटेड टू गवर्नेंस, वो जो गवर्नेंस बोर्ड है या स्टीयरिंग कमेटी है, ताकि उनसे अप्रूवल लिया जा सके, फंडिंग ली जा सके और ऑथोराइजेशन ली जा सके। मतलब अगर जब ये काम हो जाता है, चार्टर इशू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि कमिट कर दिया आपने कि ये काम अब होगा, ये प्रोग्राम अब वजूद में आ गया। प्रोग्राम चार्टर के अंदर क्या क्या सर ये चार्टर का ऑथर कौन होता है सर? यहाँ पर प्रोग्राम मैनेजर तो चार्टर के वक्त आया जब चार्टर अप्रूव हो गया या गवर्नेंस बोर्ड ने उसे सैंक्शन कर दिया। ओके, आप एक चीज मुझे बताइए कि प्रोजेक्ट का चार्टर कौन बनाता है? सर स्पॉन्सर यूजुअली। स्पॉन्सर बनाता है ना। तो बुनियादी तौर पे ये स्पॉन्सर का काम है। ये जो स्टीयरिंग कमेटी यहाँ ओके स्पॉन्सर का रोल अदा कर रही है, ये बुनियादी तौर पे उसका काम है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो प्रोग्राम मैनेजर होगा उसकी भी मदद सीख की जाएगी इसके बनने में, लेकिन वो उसका सिग्नेटरी नहीं होगा, वो इसका ऑथर नहीं होगा। ऑथर जो है वो ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी ही होगी। राइट सर, थैंक यू। अब इसमें चार्टर में क्या चीजें होंगी? प्रोग्राम का स्कोप बताएगा, प्रोग्राम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, एजम्पशंस या कंस्ट्रेंट्स अगर कोई हैं वो बताएगा, सक्सेस फैक्टर्स जिसकी बुनियाद पे केपीआईज डिटरमिन किए जाएंगे, अगर टाइमिंग कोई है तो वो बताएगा, लिमिट अगर कोई आप कहेंगे जी ये अगले 25 साल में, 20 साल में, 10 साल में, हाई लेवल रिस्क और हाई लेवल बेनिफिट्स अगर कोई हैं वो बताएगा, स्टेक होल्डर्स अगेन ये वो चीजें हैं जो अगर अवेलेबल हैं तो बता दी जाएंगी। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोग्राम का स्कोप इंपॉर्टेंट है, गोल और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, और सक्सेस फैक्टर्स और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बाकी तमाम चीजें अगर पता होंगी तो बताई जाएंगी। assumptions ऑप्शनल हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑप्शनल हैं, रिस्क हाई लेवल और बेनिफिट और ये सब कुछ, दीज आर काइंड ऑफ ऑप्शनल। इन सब चीजों को that tie the program to the business case, thereby enabling program strategy alignment। जो ही ये काम हो जाता है, चार्टर बन जाता है, तो अब हम प्रोग्राम की स्ट्रेटजी की तरफ बंध गए। अब हमने ये काम शुरू कर देना है कि स्ट्रेटजी की अलाइनमेंट चेक करते रहना है मुसलसल। मतलब ये नहीं है एक दफा करके छोड़ दी, मुसलसल उसको अलाइंड रखना है। और जहां हालात मखदूश हों, फौरी तौर पे आपने अपनी मैनेजमेंट को, स्पॉन्सर को मुतला करना है कि जनाब ये हम अलाइनमेंट से बाहर जा रहे हैं, तो फिर जो भी कोई करेक्टिव एक्शन करने की जरूरत होगी वो करेंगे। तो फॉर्मली चार्टर जो है प्रोग्राम का, फॉर्मली एक्सप्रेस द ऑर्गेनाइजेशंस विजन, मिशन एंड बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोग्राम। यूं कह लीजिए कि
the portion of strategy, organizational strategy, which is supposed to be met by this program, वो formally उसको assign कर दिया जाता है. It also defines programs, goals and objectives, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी कहा, in alignment with the organization's strategic plan in support of business case, and it provides the program manager with the authority for leading other subsidiary program projects and related activities to be initiated. मतलब जो components होंगे जो बनाएगा प्रोग्राम मैनेजर, उनको लीड करने की अथॉरिटी उसको दे दी. Provides the framework by which these program components will be managed and monitored during the course of the program. It is one of the document deliverables that will be used to measure program success. Program success कैसे नापी जाएगी? तो KPIs बनाने पड़ेंगे, key performance indicators होंगे, तो capabilities होंगी. It should include the metrics for success, a method for measurement, and a clear definition of success. तो ये जनाब हमने प्रोग्राम चार्टर में इन चीजों को सर्व किया. जब प्रोग्राम चार्टर बन गया तो अब हमने आउटले करना है अपना प्लान, मतलब आउटलाइन प्लान हमने बताना है और वो रोड मैप की शक्ल में बताया जाएगा. आपको पता है टाइमलाइन में और स्केड्यूल में क्या फर्क है? व्हाट इज टाइमलाइन एंड व्हाट इज द स्केड्यूल? जी जनाब. So timeline is a high level this representation जिसके अंदर आपके पास predecessor और successor task आ रहे हैं और लेकिन वो बड़े high level description है, but schedule के अंदर आप उसकी टास्क interdependency भी. अगर इतना ही हाई लेवल है, टास्क कहां से आ गए? टास्क का तो तू खुद बनता ना यार, इतना हाई बिल्कुल लेवल टास्क है. नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें जो मेजर आपके माइलस्टोन्स हैं उस वो हो सकते हैं. एग्जैक्टली. ये असल में ये ऐसा होता है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम टाइमलाइन जिसे कहते हैं. टाइमलाइन इज अ स्ट्रेट लाइन showing the duration of the program or project, whatever. A straight line, right? उसके ऊपर जो आपके मेजर माइलस्टोन्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली कब कब अकर करेंगे, वहां पे आप उनको उन माइलस्टोन्स को खड़ा कर देते हैं. एक स्ट्रेट लाइन जो प्रोजेक्ट की लाइफ है उसके ऊपर आप मेजर माइलस्टोन्स को खड़ा कर देते हैं. अब आप चूंकि प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम के मेजर माइलस्टोन्स क्या होंगे कि आप कहते हैं जी मैं इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रखूंगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, वो कब शुरू होगा, कब खत्म होगा. ब्रॉडली मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एग्जैक्ट स्केड्यूल बन गया है, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट स्केड्यूल, मगर वो जो माइलस्टोन्स हैं वो ये डिटरमिन करेंगे कि कब कब क्या क्या होगा. सो ये आउटलाइन किस्म का मोटा मोटा प्लान है, तो ये प्रोग्राम रोड मैप क्रिएट हो जाता है. While planning the program manager analyzes available information about the organization's strategic goals and objectives, internal and external influences, program drivers, and the benefits that stakeholders expect the program to realize. The program is defined in terms of expected outcomes, required resources, and strategy for delivering the needed changes to implement new capabilities across the organization. अब जनाब जो प्रोग्राम रोड मैप है, अभी आपको दिखाता भी हूं, is a chronological representation of a program's intended direction, graphically depicting dependencies between major milestones and decision points. मतलब रोड मैप में जो टाइमलाइन से जरा एक चीज बढ़ के है, the only thing which is in addition is कि उसके अंदर उनकी डिपेंडेंस के ये प्रोग्राम ये कंपोनेंट खत्म होगा तो ये कंपोनेंट शुरू होगा. तो उस हद तक तो आप तो जो बात कह रहे थे ना, आप तो टास्क की बात आपने कर दी थी. टास्क तो बहुत बारीक चीज है, वो रोड मैप के लेवल की बात नहीं है. तो ये तो मेजर माइलस्टोन्स हैं और उससे सिर्फ आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ तक ये कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, फिर ये कंपोनेंट यहाँ खत्म हो जाएगा, और उनका एक सीक्वेंस भी नजर आना शुरू हो जाता है, which reflects the linkage between the business strategy and program work.
While elements of a program roadmap are similar to the project schedule, देखने में apparently लगता है कि यार ये schedule ही है, मगर ये schedule नहीं है, ठीक है? There is something in between a schedule and a timeline. The roadmap instead outlines major program events, मतलब क्या क्या components होंगे, for the purposes of planning and the development of more detailed schedule. The program roadmap also reflects the pace at which benefits are realized and serves as a basis for transition and integration of new capabilities. अब इसका आप देख लीजिए, एक बिल्कुल चार्ट बना हुआ है, लेकिन ये चार्ट को आप इस तरह ना कंफ्यूज कीजिएगा। उसने जनाब ये बताया कि ये जैसे आपने वो स्विम लेन्स पढ़ी हुई हैं, स्विम लेन्स क्या होती हैं? बिल्कुल सर, एजाइल में, बिल्कुल एजाइल में भी और सॉफ्टवेयर में भी स्विम लेन्स बनी हुई हैं। ये एज सच स्केड्यूल नहीं है, ये जो कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, ये स्विम लेन्स हैं। लेकिन असल में जो काम हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो रहा है। आप इस सारे को एक स्ट्रेट लाइन पे भी शो कर सकते थे। उसने कहा जी प्रोजेक्ट डी चलेगा, उसकी डिपेंडेंस जे उस डिपेंडेंट है डी के ऊपर, और फिर डी है, ई है, एफ है, प्रोग्राम एक्स वाई जी, सब प्रोग्राम एक्स वाई जी ये चल रहा है जी तीसरा कंपोनेंट के तौर पे। तो जो लिटिल बिट ऑफ पैरेललिज्म शो कर रहा है, लेकिन एज सच ये स्केड्यूल नहीं है, ठीक है जी। तो ये जनाब आप उसके डिफरेंट पीरियड्स के अंदर उसका फ्लो दिखाते हैं कि एक्चुअली ये सारे कंपोनेंट कंडक्ट कैसे होंगे। मोटा मोटा प्लान, बहुत मोटा मोटा प्लान। The program roadmap can be a valuable tool for managing the organization of a program and for assessing a program's progress toward achieving its expected benefits. To better enable effective governance of the program roadmap can be used to show how benefits are delivered within major stages or milestones. तो मतलब ये है कि ये broadly ये चेक करने के लिए काफी है कि आया कि हमारा प्रोग्राम जो है वो किसी तरतीब में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। However, it may include the component details, their durations and contributions to benefit. In a large construction program, for example, the roadmap may present stages of construction toward the final benefit of the construction. जो आपके सिस्टम डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स हैं, तो प्रोग्राम रोड मैप जो है may depict how benefits such as system capability will be delivered. Or a roadmap is an effective way to communicate the overarching plans and benefits to stakeholders to build and maintain advocacy. फिर जनाब आपकी एनवायरमेंटल असेसमेंट आ जाती है। वही बात इंटरनल और एक्सटर्नल होती है एनवायरमेंट की असेसमेंट में, और जो internal external influences to program that have a significant impact on the program's success. Influences from outside the program में आ जाता है कि may be internal to the larger organization or maybe come from source external to the organization. मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो कुछ भी आपने environmental assessment की है ये it is only based on क्या कहते हैं उसको, प्रोग्राम सक्सेस जो है वो बेस हो रही है इन चीजों से। तो इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम वो हमें कर सकती हैं, इंटरनल को असरअंदाज हो सकती हैं, या आप कहें कि जी सोर्स एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोग्राम मैनेजर्स शुड आइडेंटिफाई दीज इन्फ्लुएंसेस एंड टेक देम इनटू अकाउंट व्हेन मैनेजिंग द प्रोग्राम इन ऑर्डर टू ensure ongoing development alignment है, the programs in continued alignment with the organization है, strategic goals and objectives हैं, और overall कोई अगर प्रोग्राम सीरीज की अपनी कोई जरूरत है तो वो आप कर सकते हैं। फिर हैं जी आपके एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि हम पहले से आए हैं,
PMP में भी पढ़ा था। ये एक्सटर्नल होते हैं जी ऑर्गेनाइजेशन से, और इनकी जो इन्फ्लुएंसिंग है उसमें क्या क्या चीज आती है। क्या हो जी, हाँ जी। तो environmental factor refers to conditions under the immediate control of the team, or a program should be selected and prioritized according to how well it supports the organization goals and objectives. Strategic goals change, however, in response to environmental factors. Environmental factors आपके strategic goals को disturb कर सकते हैं. When this occurs, a change in the direction of the organization may cause the program to be misaligned with the organization's revised strategic plan. In this case, the program may be changed, but on hold and cancelled, regardless of how well it was performing. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पे इम्पैक्ट हो रही हैं, हमें कर सकती हैं? बिजनेस की इन्वायरमेंट है, मार्केट है, फंडिंग कहाँ से आएगी, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, इंडस्ट्री है, हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंट है, इसको तो हमने बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। कल्चरल डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी है, रेगुलेशंस हैं, लेजिस्लेटिव है, ग्रोथ है, सप्लाई चेन बेस है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। तो ये सब चीजें जो हैं ये आपके लिए मैटर करती हैं एंटरप्राइज सेक्टर में, उसके मुताबिक काम करने में। Considerations of these factors and their associated uncertainty or change helps the ongoing assessment and evolution of an organization and the alignment of its program with its goals. The online management of a program should include continual support of the environment. Always कैसे होगी? फिर एनवायरमेंटल असेसमेंट आ जाती है जी। फॉलोइंग सेक्शन outlines various forms of analysis that may be used to assess the validity of program-based business case and program management plan. Considerations of the results from one or more environmental analysis enable the program manager to highlight factors that have potential for impacting the project and inform risk management. Section 3.4.2.5 है, ये 3.4.2.1 से लेके 5 तक 5 आइटम है। Representative sample of environmental analysis but may be performed on simple cases. Okay. Representative samples of organizational environmental analysis may be performed or decommissioned by Mr. Project Manager. Okay. ये हैं जी आपकी, एक मिनट में पीछे चला जाऊं थोड़ा रिस्क से। यहाँ प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हमारा 5वां और आखिरी टॉपिक है, और इसके अंदर सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम रोड मैप अलाइंड with organizational strategy and with consideration to the environmental factors found in the environmental assessment depends on a well-defined program risk strategy. क्या क्या चीजें हैं प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट में जो हम ना कर सकते हैं? एक्टिवली आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटरिंग करनी है, एनालिसिस करना है, एनुअल होगा या एनुअली पे करेंगे या 3 मंथली करेंगे, जो भी कोई हिसाब किताब होगा वो आप बता दीजिएगा। Risk management and strategy alignment. Strategy alignment comprises the elements of program roadmap
and it supports if objective are organized, जो आपका organizational strategy है. This involves having a risk management strategy that ensures effective management of any risk that can cause the program to be out of alignment and organizational strategy. फिर रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में हमें डिफाइन करना होगा प्रोजेक्ट रिस्क के थ्रेशोल्ड्स को, इनिशियल प्रोग्राम रिस्क को और असेसमेंट. फिर तीसरा जो है उसमें हाई लेवल प्रोग्राम कम फ्रॉम रिस्पॉन्ड करो स्ट्रेटजी, उस हद तक आप लेके जा सकते हैं. डिटर्मिनिंग हाउ डॉन का ये सब कुछ रखा हुआ है. डिफाइनिंग रिस्क थ्रेशोल्ड्स, परफॉर्मिंग द इनिशियल प्रोग्राम रिस्क असेसमेंट, डेवलपिंग हाई लेवल organizations, determining how risk will be communicated and to strategic levels of the जी risk thresholds हैं. Strategy alignment requires program risk thresholds to take into account the organizational strategy, including its risk appetite, which is an assessment of the organization's willingness that they are all, जब तक उनका सबकी बेस शामिल नहीं होगी उस वक्त तक ये थ्रेशोल्ड एस्टैब्लिश नहीं हो सकते. प्रोग्राम रिस्क के थ्रेशोल्ड्स ये एक मेजर है of the degree of acceptable variation around a program where the PAO around program activities objectives that selling reflects the risk appetite of the organization and program stakeholders. फिर जनाब आपके रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एटीट्यूड्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन के. बिल्कुल. आपको इसका अंदाजा है, फर्क पता है रिस्क टॉलरेंस में और ये रिस्क थ्रेशोल्ड और ये जो बहुत सी इस तरह की मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज हैं? जी सर. ओके, ठीक है. मोहित आप हैं यहाँ पर? सर मैं हूँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, हाँ बिल्कुल. ओके, तो हम बात करते हैं रिस्क थ्रेशोल्ड की. हमने कहा ये मेजर है डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबल वेरिएशन का. इसके अंदर होगा तो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे दैट रिफ्लेक्ट दैट रिस्क एपिटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम स्टेकहोल्डर्स. इसके अंदर जो एक्सेप्टेबल है मुझे वो रिस्क, वो मेरी एपिटाइट में आता है. As previously mentioned, that key elements of program risk strategy is the establishment and monitoring of program risk threshold. Program risk threshold के हवाले से for a risk to be included in the risk management plan, previously mentioned a key element of program risk management as किधर गया? As previously mentioned, key elements of program risk strategy is establishment and monitoring of program risk thresholds. Examples are program risk threshold includes minimum level of risk exposure. कम से कम risk exposure हो, qualitative high, medium और low type, मतलब analogous type की उसकी computation हुई हो या quantitative हो. Maximum level of risk exposure that can be managed, वो भी हो सकता है. Integral step. Establishing program risk threshold is an integral step in linking program risk management to strategy alignment and therefore could be done as part of early planning based on the risk management of the organization, program governance, working collaboration with corporate governance, and the problem management team may also be responsible for ensuring the program risk
threshold are established and observed in the program. फिर जनाब आपकी रिस्क असेसमेंट आ जाती है। एक मिनट जी, थोड़ी सी ब्रेक दीजिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। श्योर सर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इनिशियल प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट की। इसमें उसका इंटीग्रल स्टेप जो है वो क्या है? व्हाइल प्रोग्राम रिस्क मैनेजमेंट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। आपको पता ही है कि रिस्क मैनेजमेंट जो इस प्रोजेक्ट में भी हमने पढ़ी है वो यही है कि आप बेशक इसको इवन चार्टर के वक्त भी जो हम हाई लेवल रिस्क लेते हैं तो उस वक्त रिस्क मैनेजमेंट की कार्रवाई तो शुरू हुई होती है, लेकिन वो सिर्फ ब्रॉडली देख रहा होता है। बाद में जब हम प्लानिंग में जाते हैं तो रिस्क को और ज्यादा तफसील के अंदर वो देखता है, आइडेंटिफाई करता है और काफी माइक्रो लेवल पे जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब आपने एक दफा जब इसे स्टार्ट कर दिया है तो नए रिस्क फिर आइडेंटिफाई करते ही रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। So, while program risk management is conducted throughout the life of the program, the initial program risk assessment prepared during program definition offers a unique opportunity to identify risk to organizational strategic alignment. It enables risk to be considered when developing the program roadmap and when examining environmental factors. तो एक तरफ से हम environmental factors को देख रहे हैं, दूसरी तरफ से हम risk को देख रहे हैं। As such, it is critical that the initial program risk assessment identifies any risk to the strategy alignment. तो ये ज़हन में रखिएगा कि अभी हम सारी रिस्क प्रोग्राम के नहीं निकाल रहे, इस वक्त हम सिर्फ उन रिस्कों को फोकस कर रहे हैं जो प्रोग्राम की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को खतरे में डालते हैं, which includes but is not limited to any uncertain event or condition that if they occur could lead to program objectives not supportive of organizational objectives, program roadmap not aligned with the organizational roadmap, program roadmap not supportive of portfolio roadmap, program objective not supportive of portfolio objectives, and program resource requirements out of sync with organizational capacity and capability. Once the initial program risk assessment is performed, a risk response strategy is developed to complete the program risk management strategy. फिर आप क्या जाती है रिस्क की रिस्पॉन्स। लाजमी बात है आपने असेसमेंट रिस्क की कर ली, अब आप रिस्क का रिस्पॉन्स बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे रेटिंग का कोई क्राइटेरिया आपने बनाना है। Program risk response strategy
combines the elements of risk threshold and the initial risk assessment into a plan for how program risk will be managed and effectively and consistently throughout the life of the program. For each identified risk, the risk threshold can be used to identify the specific response strategy based on a number of rating criteria. वही जो हमने weighted average की बात की है, तो एक तरह से a number of in parallel या क्या कहते हैं sequentially किसी भी तरीके के साथ आपका रिस्क की स्टडी हो सकती है. Response time में for an organization that views 5% scheduled variance as acceptable कि 5% तक टाइम ऊपर नीचे होता है तो हमें कोई परवाह नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिस्क का थ्रेशोल्ड जो है वो 5% स्केड्यूल डिले का है. और रिस्क की रेटिंग क्या है इस वक्त? नो सिग्निफिकेंट रेटिंग. एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी जो है वो ये है कि हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे. अगर ये चीज 5% के अंदर अंदर हुई तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे. A robust program risk management strategy comprises or a specific risk response strategy for each of the risk rating levels that they have been developed to reflect the program's risk threshold. Once established, the program risk management strategy drives consistency, effectiveness in program risk management activities throughout the program as part of the program integration and supportive activities. In addition, the established program risk management strategy enables the program to communicate and manage the program risks consistently throughout the course of the program performance as part of governance. और गवर्नेंस का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी. Program strategy alignment, therefore, is a program performance domain that is initiated during the program definition phase with the development of the business case, program charter, and program roadmap, supported with charter and program roadmap supporting with inputs from environmental assessment and program risk management strategy. This upstream effort results in the development of a program management plan that is aligned with organizational goals and objectives. Okay, this brings us to the end of chapter number 3. अब हम एक काम और करते हैं और वो ये करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 तक का जो मैटर है इसमें हम देखते हैं हमारे पास टेस्ट कौन सा अवेलेबल है. ग्रेट सर, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक्स भी भेजे हुए हैं. अच्छा अच्छा. एक्चुअली वो जो आपने भेजे हैं ना उनको मुझे भी प्रोसेस करना पड़ेगा थोड़ा सा. बिल्कुल सर, वो ऐसे कोई सीक्वेंस में नहीं है, वो तो सब मिक्स्ड है कि आप जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं. हाँ जी. अच्छा जी, मैंने ये एग्जाम लॉन्च कर दिया है. आप लोगों को अपीयर हुआ कि नहीं हुआ? सर आ गया मेरे पास. Your time has started.